Honorable Chief Guest, Mr. A.F. Madon, Administrator, Jssp Foundation, Vice Principal, Mrs. Gurmeet Kaur, Mrs. Tami Sikdar and Miss Vijeta Panda, the school coordinators, teachers, staff members, parents, and my dear students. On this grand and auspicious occasion of the 76th Independence Day celebration of India, I am extremely elated to convey my warm greetings and welcome you all, each one of you in the Jssp family, to this Independence Day celebration. Today I am really exhilarated because once again I can see the warm and cordial presence of all three: students, teachers and parents in this gathering, where we celebrate the completion of 75 years of independence of India. So after 2 years we have got this opportunity. Today's day reminds us of the pride to be an Indian. Our pride to be an Indian, our pride to be the citizen of a country which is the largest democracy and one of the oldest civilizations of the world. A country which has given virtues and gifts innumerable to this world. Right from zero to the world's first university. I hope everyone knows that zero Aryabhat had discovered. So, zero to first university of this world, Takshila. From chess to anesthesia. If you remember, father of medicine, Sushrutam. From Ayurveda to yoga. The list is endless. India has innumerable contributions to the world. And I would like to quote some people, very important ones, in the words of Albert Einstein. I quote, "We owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made." I unquote. In the words of Mark Twain, I quote, "India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India only." I unquote. So that is the greatness of the country where we all are residing, of which we all are the citizens. Today's day also unfolds the plenitude of memories of those freedom fighters who made the supreme sacrifice to pave the way for India's independence in 1947. So I pay a tribute on behalf of this entire Jssp family. I pay a tribute and homage to those freedom fighters who have made this supreme sacrifice in the name of the country. This day also reminds us of the brave soldiers who have left their luxurious life for protecting the borders of our country. 24/7/365, they are there whatever conditions may be. They are there to protect our borders.
And they go on missions where they know from the beginning that when the mission ends, they may come back wrapped in the tricolor. They may come back wrapped in the tricolor, and for such brave hearts, I would like to quote two lines. सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो रहते हैं तैयार, हमेशा बांध के कफन। सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो रहते हैं तैयार, हमेशा बांध के कफन। भारत माता के इन वीरों को, भारत माता के इन वीरों को हमारा शत-शत नमन, हमारा शत-शत नमन। Our warmest greetings goes to these brave hearts of our nation who have been protecting our borders. I want to ask one question. We always say that the soldiers are protecting the borders of our country. Is it only the responsibility of the armed forces to protect the freedom of our country? Are we doing our bit to protect and value that freedom which has been achieved after years of struggle of independence, and which each second our brave hearts are protecting at the borders? Is it only their responsibility? Then what are we doing? We can also show the love for our country by passionately shouldering the responsibilities and the roles which have been assigned to us. Each one of us has a role. You know, our 2020 census, it says that 65% of Indian population is below the age of 35 years. That means 65% of this Indian population is young. They are the youth of India. And sitting in front of me are all leaders of tomorrow. The youth of tomorrow who will be setting the vision for 2047, when we will celebrate the centenary of our independence. So tomorrow, some of you will be entrepreneurs, some of you will be in the role of educators, some media people, some will be professionals in agriculture, professionals in environmental initiatives, some doctors, some engineers, and definitely some of you will be a part of the prestigious armed forces. So all of you will be having a role, and if we decide that our goals and our goals in those roles are aligned with the progress of the nation, then definitely we are contributing towards the progress and development of our nation. I would like to quote Lal Bahadur Shastri ji. He said, "The preservation of freedom is not the task of the soldiers alone. The preservation of the freedom is not the task of the soldiers alone. The whole nation has to be strong. And you, the youth of India, you have to be very, very strong to ensure that we achieve the vision of 2047. You have to be instrumental in that. That is when you are entering your professional life. Till you enter your professional life as a student, what are the things that you can do? You can take small steps, small initiatives, some of which are already done in school. But you can take those initiatives in your locality, around your neighborhood, and support in such initiatives around the city also. Like, planting and protecting trees, creating an awareness
on safety, especially road safety amongst the youth and your parents also. Creating an awareness on sustainability, that is saving energy, conservation of water, and conservation of electricity. If you save electricity. So these are certain initiatives that you can take. You can also contribute. Weekly you have 24 into 7 hours. That makes it around how many hours? 24 into 7? Yes? 168 hours, right? So in these 168 hours, can you not spare 2 to 3 hours to teach a kid who is not so regular to the school, who cannot afford to be regular to school like you people? So I'm sure that you can take one of these initiatives and do your bit for the country, contribute for the country. And I'm sure that you will tell your class teachers on the next day that what is the initiative that you are going to take up from your side. With this, I request everyone to join hands together so that we work together for the progress of our country, for the development of our country. We all need to be together in these initiatives. I congratulate all of you once again on the completion of 75 years of independence. There is a cultural program lined up for today's celebration. I'm sure you are going to enjoy the program. And before I end, I would like you all to repeat these slogans after me. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you and God bless.
नमस्कार, मैं कुमार अक्षर आप सभी का इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस माहौल को देख के लग रहा है कि हवाओं में आज़ादी की खुशबू है, रग रग तिरंगे से रूबरू है। हुए हैं बड़े साहसी हमारे देश में, उनकी कफन से ही हमारी आबरू है। आज से 100 साल पहले किसने ये उम्मीद की होगी कि हम भारत की जनता इस खुले अंबर के नीचे अपनी आज़ादी का जश्न मना रही होगी। जिस समय अंग्रेजी हुकूमत हमारी सीने को चीर रही थी, जिस समय हमें अपने नाक को जमीन पर रगड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिस समय अपने ही लोग अपनों को डंडे और गोलियों से वार कर रहे थे, उस समय यह सोच पाना कि हमें भी आज़ादी मिलेगी, यह कल्पना अपने आप में ही एक आज़ादी थी। हम सभी कर्म करते हैं, कर्म के उपरांत हमें फल की चिंता होती है, इच्छा होती है, पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस उद्देश्य के लिए अपना जान दे दिया जिसका परिणाम उन्हें पता भी नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि उनके इस बलिदान से, उनकी इस कुर्बानी से इस देश को आज़ादी मिलेगी कि नहीं, पर उनको इतना जरूर पता था कि जब भी आज़ादी की इमारत खड़ी होगी, जब भी आज़ादी की इमारत खड़ी होगी, उसकी नींव पर हमारी कुर्बानी होगी। जब भी देखेगा यह आसमान हिंदुस्तान की सरजमी को, जब भी देखेगा यह आसमान हिंदुस्तान की सरजमी को, उसके भाव में हमारी लहू की खुशबू होगी। फिर क्या था, कुछ ने फांसी के फंदों को चूम लिया तो कुछ ने सीने पर गोलियां खा ली, मातृभूमि को आखिरी बार चूमकर स्वर्ग की सीढ़ियां पा ली। आज हम थोड़ी सी असफलता पर डर जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा पीड़ा सह नहीं पाते। पर मैं चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए उस पीड़ा को, उस दर्द को, जब भगत सिंह और उनके साथियों ने सहा होगा, जब उनके नाक और गले में नली घुसाई जा रही होगी और जबरदस्ती खाना डाला जा रहा होगा ताकि उनका 116 दिन का अनशन टूट सके। आपको वीरता और साहस का उदाहरण देखना है तो चलिए बंगाल की शेर की तरफ, जिनको कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश के बाहर रहकर देश के लिए सेना खड़ी कर दी और हमला ऐसा किया कि देश के अंदर बगावत शुरू हो गई थी। आपको निडरता का एक और उदाहरण देखना है तो उस समय की कल्पना कीजिए जब चंद्रशेखर आजाद ने अपने मूछों को ताव देते हुए ये कहा होगा कि हाँ, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र और मेरा घर है वो जेल जहां पे मैं जाने वाला हूं। अखंडता और एकता का उदाहरण या नमूना हम तो तभी देख दिए थे जब गांधी जी ने वो सारे आह्वान दिए थे, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन, जिस समय जन सैलाब उमड़ पड़ी थी सड़क पर और हुकूमत की किला हिला के रख दी थी। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी आजादी, हमारा देश, हमारी देशभक्ति इन सब महान लोगों की कुर्बानी पर टिकी हुई है। वो कहते हैं ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज सरहद पर तिरंगा फहराया जा रहा होगा, मिठाइयां बांटी जा रही होगी, जश्न मनाया जा रहा होगा, पर अंत में उन्हें उसी पोस्ट पर जाना होगा जहां पे उनकी ड्यूटी होगी। आज भी उन्हीं गोलियों का सामना पानी की बूंदों की तरह करना पड़ेगा। जब एक गोली उनके जहन के आर पार गुजर जाएगी तो उस एक क्षण में उन्हें अपने पूरी परिवार का ध्यान आया होगा, पूरे परिवार का चेहरा उनके सामने आया होगा, पर तिरंगे के सामने सब धुंधला पड़ जाता है। जिंदगी में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जिंदगी में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। कुछ मर गए हैं नोटों में लिपट कर तो सोने में सिमट कर, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। आजकल हमारे देश में देशभक्ति की परिभाषा भी थोड़ी बदल चुकी है। राष्ट्र ध्वज फहराना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान गाना, देशभक्ति पर अच्छे गाने सुनना और देशभक्ति पर अच्छे फिल्म देख लेना, यही हमारी देशभक्ति है और हमारी देशभक्ति यहीं तक सिमट कर रह गई है। पर और 26 जनवरी तो 15 अगस्त तो हमारी महज छुट्टी के दिन बनकर रह गए हैं, बल्कि मेरे हिसाब से तो इस समय, इस दिन हमें सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, सबसे ज्यादा काम करना चाहिए ताकि अगले 365 दिन का हिसाब हम अगले आजादी के दिन पे दे पाए कि इस पूरे साल में हमने देश के लिए क्या किया और खुद के लिए क्या किया। और मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा जो हाथ में झंडे लेकर बिना हेलमेट के तेज रफ्तार में बाइक या स्कूटी चलाते हैं, उनकी जो देशभक्ति है वो निम्न स्तर की है और मैं इसे देशभक्ति नहीं मानता हूं। और जो ये करते हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि मुल्क के करीब जरा आओ तुम, तब कोई बात बने, बुझी हुई मशालों को जलाओ तुम, तब कोई बात बने। जो सूख चुका है लहू शहीदों का, जो सूख चुका है लहू शहीदों का, उसमें अपना लहू मिलाओ तब कोई बात बने।
ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई दिक्कतें नहीं है, सब देश में दिक्कतें होती हैं। आज भी आतंकवाद है, गरीबी है, जात पात के चश्मे से आज भी हम एक दूसरे को मापते हैं, धर्म के नाम पर आज भी दंगे होते हैं। पर जब हिंदुस्तान पर से सूरज ढलता है और आसमान में लालिमा छा जाती है, तो उसमें हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी चाहिए, वो है अखंडता और एकता। और जो नफरत फैलाते हैं ना इस देश में, उनके लिए कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई रब नहीं होता, दरिंदों के लिए कोई मजहब नहीं होता, तबाही करने वालों का मजहबी तबाही है, उनके लिए किसका खून बहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नफरत बुरी चीज है यारो, ना पालो इसे, दिल में कलेश है तो निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा, ना उसका ना उसका, ये सबका वतन है यारो, संभालो इसे। और अंत में मैं अपने भाषण को विराम अपने युवा साथियों और युवा दोस्तों को संबोधित करते हुए कहूंगा कि अपने लक्ष्य की तरफ प्रेरित रहें, कर्म करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अंत में भगत सिंह का एक पैगाम और एक शेर आप सबके सामने हाजिर है कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं गुरनूर कौर आप सभी के समक्ष इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है करे आज़ादी की रखवाली, आओ निभाए अपना फर्ज। शत शत नमन करे शहीदों को, शत शत नमन करे शहीदों को, यह बहादुर वीर न्यौछावर किए प्राण अपने, लिख गए देश की तकदीर। अपने बलबूतों देशभक्ति के जज्बों से, अपने बलबूतों देशभक्ति के जज्बों से हमें आज़ादी दिलाई है। दिलों में रहेंगे अमर शहीद सदा, लिखा जिससे फैसला की स्याही है। शत शत नमन करे शहीदों को। वतन की खुशियों के खातिर, वतन की खुशियों के खातिर अपना खून बहाए हो, मिलती रहेगी हमें प्रेरणा, हमारे दिलों में समाए हो। शत शत नमन करे शहीदों को। दिलाई हमें आज़ादी, दिलाई हमें आज़ादी, नभ में फैली है सूरज की लाली, प्रकृति भी गूंज उठी है वतन में आज़ादी की हरियाली। शत शत नमन करे शहीदों को। है हम आज़ाद, है हम आज़ाद, देश में फैली है आज़ादी की खुशहाली। फर्ज है मेरा मरते दम तक करे देश की रखवाली। शत शत नमन करे शहीदों को। रहे देश सुरक्षित, रहे देश सुरक्षित, करे रहे देश सुरक्षित, करे प्रगति हमारा वतन, सुख शांति रहे देश में, करते रहे हम पूरे जतन। शत शत नमन करे शहीदों को। होगा देश का विकास, होगा देश का विकास, जब निभाएंगे अपना फर्ज। रहे तैयार, रहे तैयार, देश सेवा खातिर एक देशभक्त करे है आपसे अर्ज। शत शत नमन करे शहीदों को, शत शत नमन करे शहीदों को, शत शत नमन करे शहीदों को। धन्यवाद। The Song of Youth by Dr. APJ Abdul Kalam, and I quote, as a young citizen of India, armed with technology, knowledge and love for my nation, I realize small ape is a crime. I will work and sweat for the great vision, the vision of transforming India into a developed nation, marked by economic strength with value system. I am one of the citizens of the billions. Only the vision will ignite the billion souls. It has entered into me. The ignited soul, compared to any resource, is the most powerful resource on the earth, above the earth and under the earth. I will keep the lamp of knowledge burning to achieve the vision to develop India. If we work and sweat for the great vision with ignited minds, transformation leading to the birth of vibrant, developed India will happen. I pray the Almighty, may the divine peace with beauty enter into our people.
happiness, and good health blossom into our bodies, minds, and souls. Thank you. इधर कर इधर सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। ये प्यार का संगीत है। ये शांति का गीत है। ये एकता का राग है। भारत अनोखा राग है। तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव विजयी भव आज से अब से आन नहीं मैं ना छूने दूंगी जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी I would say what a fantastic performance on the 75th Independence Day. Starting right from the start, where the principal gave a very good coverage of the whole thing. And I may be repeating certain things, but she has covered anything and did not leave anything behind for me. Similarly, it was followed by 3 wonderful students who in their own way expressed their feelings today. It was just wonderful. And I would like to mention the person who spoke in Hindi. He spoke beautifully. He's sitting here in front of me. You spoke beautifully. The message was beautifully conveyed. Both
kinds of people available in the country, and you conveyed it to both kinds. So I'm very happy with that. And finally, the dance which was there and the cultural program which was there. What does all this show? To me, it shows that the youth of tomorrow, the leaders of tomorrow, which probably she has also touched upon, they're all here in Jssp. The reason being that you have very, very meticulously followed your vision, mission and values. When you grow up towards the next celebration, which is 2047, I'm sure all of you will be there in important places in the country, and there will be another set of people over here sitting and watching, some of you who have done wonders for the country. And I also know that you can contribute, which has already been told, and again, in spite of repeating, I'm saying so, in your own homes, in your own schools, by showing examples. You have to work as a team. You have to understand what the country wants from you. You are an important part of the whole thing. That is very, very clearly told by whatever functions that you have held before. I don't want to repeat all that. I wish I had taped it, then parts of it I would have repeated. But no, it is not taped. It has come from the heart, and it should go to the hearts. So that is what is happening. And I'm very happy to learn from Jssp and the teachers and the staff and the sub-staffs also who are present here, whom I forgot to mention earlier. This was a wonderful program, and this is what is required. The Independence Day celebrations must remember our past heroes, our present heroes, and the heroes of future. I can tell you one thing, the heroes of future are sitting right in front of me. All the very best. Don't get discouraged. Just keep working, keep doing what you think is right, keep utilizing the values given to you by your parents, by your teachers, by Jssp as a whole. And I'm sure you'll come out into the world with flying colors. Thank you.